हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधांशु सिंह और मैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले के सीटी का 2026 मतलब आज जो पेपर हुआ है के सीटी का, आज उस पेपर का हम डिटेल सोल्यूशन लेकर के आ गए हैं आपके पास। और पेपर के बारे में बात करेंगे, पेपर किस तरीके का पेपर बना था, कौन से क्वेश्चंस इजी थे, कौन से क्वेश्चंस मीडियम थे और किन क्वेश्चंस को कोई शॉर्टकट हो, कोई आसानी से किया जा सकता है। हम उन सारी चीज़ों में आज डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो moving on to the first question of the KCET, which is I will tell it is a average or hard question। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि इसमें इन ए स्मॉल टाउन विद ए डिमांड ऑफ 900 किलोवाट, तो द इलेक्ट्रिक पावर, तो इसमें एक 900 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर की डिमांड है इस टाउन में। और उसमें हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है, वी विल राइट डाउन द इंफॉर्मेशन एज पावर इज इक्वल टू 900 किलो वाट। तो 220 वोल्ट में सप्लाई चाहिए, वी नीड द पावर एट 220 वोल्ट एंड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज टू बी डन फ्रॉम द 20 किलोमीटर डिस्टेंस। तो दैट मीन्स द टोटल वायर विच हैज टू बी सर्कुलेटेड दैट इज 40 किलोमीटर ऑफ वायर, क्योंकि पावर जनरेशन से वायर आएगा टाउन तक, टाउन से फिर पावर जनरेशन तक वायर जाएगा। तो वी विल से दैट लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। फिर उसके बाद वायर टू वायर लाइन सिस्टम हैज अ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ 5 इंटू 10⁻⁴ ओम पर मीटर। तो वी हैव गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ विच इज 5 इंटू 10⁻⁴ ओम पर मीटर, 5 इंटू 10⁻⁵ ओम पर मीटर। तो टाउन गेट्स पावर फ्रॉम, अच्छा जो लाइन का सप्लाई है दैट इज एट हैपनिंग एट अ 45,000 वोल्ट। तो पावर सप्लाइड इज डन एट 45,000 वोल्ट। नाउ 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एट अ substation in the town, the line power loss in the form of heat। तो basically we have to tell about the heat कि कितना heat generate हो रहा है। तो first we will find out the current, first we will find out the current and then we will find the total resistance of the wire, then I square R will be the heat। तो हम देखते हैं, तो क्योंकि power is equal to potential into current, the potential at which the electricity is supplied, तो power is 900। तो we will write this 900 into 10 to the power 3 watt divided by potential is 45,000 is equal to current। तो हमको करंट मिल जाएगा, ये कट गया और 20। तो करंट विच वी आर गेटिंग इज 20 एम्पियर, करंट इज 20 एम्पियर। टोटल रेजिस्टेंस इन द वायर वी कैन फाइंड यूजिंग लेंथ ऑफ द वायर एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ ऑफ द वायर इज 40 किलोमीटर, तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 40 into 10 to the power 3 meters into, we will write the unit in SI unit, or resistance per unit length is 5 into 10 to the power -4। तो 5 into 10 power -4, तो that value comes out to be -4 और 10 power 3 0 कट जाएगा, तो ये बचेगा 20 ohm। तो we have calculated the current and resistance and afterwards we will find the heat we can write as I square R। तो I current is again 20, तो 20 into 20 into 20 which is 8,000 watt। और हम ऑप्शंस तो देखेंगे, तो we have seen 8 किलोवाट, this is the correct answer, 8 किलोवाट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी और 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग। तो अगर मैच द फॉलोइंग है तो इसको हम डायरेक्टली वी विल नॉट ट्राई टू फाइंड एवरीथिंग, हम बस कुछ ऑप्शंस को मैच करेंगे। जैसे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। तो ए इज मैचिंग विद द 1, तो A1 A2 A2, तो दीज टू ऑप्शंस कैन विल बी एलिमिनेटेड। वी हैव अगेन B is matching with 3 and B is matching with 2. So we will see Gauss law of magnetism. Gauss law of magnetism is B dot dA is equal to net electric flux through a loop will be 0. So we will see B is matching with 3. So we will not check the further option, क्योंकि ये option eliminate हो जाएगा
then option number 1 is the correct answer. Moving on to the next question. With the reference to the given figure below, match the following. So with reference to the given figure below, match the following. तो we will match the following. तो अब हम देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज दिस एंगल इज अगेन 30 डिग्री, तो वी हैव दिस ऑप्शन एज 30 डिग्री, दैट मीन्स ए इज 3, तो ए इज 1, ए इज 2, तो दिस इज अगेन एलिमिनेटेड, बचा कौन सा 3 एंड 4, तो वी विल चेक द बी वैल्यू ऑफ अल्फा. अल्फा इज दिस एंगल, सो this angle is again 60 degree, we can say this is 90 degree, normal will be perpendicular to the surface, so this is the normal, so this angle is 60 degree, again alpha is 60 degree, so b is 2, b is 1, so we got a as 3, b as 1, and again see this option is showing b is 2, so this is wrong, so option number 3 will be the correct answer. So सारे ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं, वी कैन जस्ट इलिमिनेट. अगेन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर शोन बाय पी क्यू. तो वाइल द डायरेक्शन विच द रे वुड ट्रेवल आफ्टर रिफ्लेक्शन इज शोन बाय 4 rays मार्क एज, तो बेसिकली दिस इज द रे विच वी हैव टू सी, एंड देयर आर 4 rays इन दिस, विच आर द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्टेड रे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रे इज इंफॉर्मेशन इज गिवन, रे इज अ पैराक्सियल रे एंड इट इज passing parallel to the principal axis, so it will pass through the focus, that means option number C. So option number 2 is C. This will be the correct answer for this question. Moving on to the next question, the incorrect statement about refractive index. तो refractive index के बारे में पूछा है कि which statement is incorrect about refractive index of pair of medium. So it depends upon the nature of the first medium, obviously it depends on the nature of the medium, so whether it is first or second, ठीक है, depends on the medium, nature of second medium, so it is again we have to find the incorrect option. So this is correct, it depends on the wavelength of light, since the speed of light changes with respect to the medium, so with respect to different wavelength of light, the refractive index of that medium will also change, so this option is correct answer. So obviously fourth option will be our wrong answer, but we will see. It depends on angle of incidence, so there is no relation between refractive index and angle of incidence, because we know that refractive index depends on the velocity of light in that medium. So this is our option correct, which you have to fill the circle. So option number 4 is the correct required answer in this case. These 3 are correct and this one is incorrect. Okay, so moving on to the next question. So in this question we have been given the critical angle for a monochromatic light going from medium A to medium B is theta. तो हमको critical angle बोल रखा है, critical angle is theta, medium A to medium B, the critical angle is theta. If the speed of light in medium A is v, then speed of light in medium B. तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कैलकुलेशन की मदद लेंगे, तो कैलकुलेशन भी हमको पूरा नहीं करना है, तो अगर देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मीडियम ए एंड मीडियम बी, एंड बिकॉज क्रिटिकल एंगल गिवन है तो दिस इज ऑब्वियसली डेंसर मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फर्स्ट मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकेंड मीडियम म्यू बी. नाउ वी नो दैट फॉर क्रिटिकल एंगल, फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस एट क्रिटिकल एंगल, angle of refraction will be 90 degree, and from the Snell's law we can simply write mu1 sin theta 1 is equal to mu2 sin theta 2. Mu1 sin theta 1 is equal to mu2 sin theta 2, so we can write as mu a sin of theta critical is equal to mu b sin of angle of reflection in this case will be 90 degree, so 90 degree, so we can write mu a upon mu b is equal to this will be 1 and this will be 1 upon sin theta c. हमसे बोला है कि the speed of light is v, the speed of light in medium A is v, speed of light in medium A is v. तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द फर्स्ट मीडियम mu a is equal to c upon speed of light in medium 1, speed of light in medium 1, तो c upon va.
अगर हम म्यू बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकेंड मीडियम की बात करें, दिस विल बी सी अपॉन वी बी. तो वी हैव थ्री इक्वेशंस. So we have to find the speed of light in medium B in terms of sin theta, cos theta or something else. तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फर्स्ट मीडियम आ गया तो वी विल सिंपली डिवाइड दीज टू इक्वेशंस एंड वी विल गेट म्यू ए अपॉन म्यू बी इज इक्वल टू वी बी अपॉन वी ए. तो जनरली जो जनरल कैलकुलेशन होता है, यू व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई बी अपॉन सी, दिस इज द कॉमन जनरल मिस्टेक विच स्टूडेंट्स मेक. तो ये ऑपरेशन आपको करते समय यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दिस थिंग. तो we have got Vb upon Va, and we know the speed of light in Va first medium is V. So we can replace Va by V, Vb upon V, and again we know that mu A upon mu B is 1 upon theta C. So we will replace as 1 upon sin theta critical. So Vb will be V divided by sin theta. This is the required answer, and this is third option. So the correct answer for this will be option number 3. Moving on to the next question. हमको यहाँ पर ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन केस ऑफ विजिबल लाइट. सो विजिबल लाइट के केस में वायलेट का वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर एंड फॉर रेड इट इज 700 नैनोमीटर. तो दिस इज द डायरेक्ट आंसर विच यू हैव टू जस्ट टिक एंड मूव ऑन. नेक्स्ट, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हाउ मेनी मैक्सिमा कैन बी सीन. तो जब नंबर ऑफ मैक्सिमा नंबर ऑफ मिनिमा वी हैव टू कैलकुलेट. So we will simply draw the diagram for double slit experiment, and we will see the condition for maxima, and what information we have given. D is lambda by 2, that is distance between 5 lambda by 2. Slit distance between the slits is 5 lambda by 2, and for maxima the condition for maxima is condition for maxima is d sin theta is equal to n lambda, where n is any integer number. D sin theta is equal to n lambda where n is any integer number. So d sin theta is n lambda. Simply we know that for just a second. Again, d sin theta is equal to n lambda, and if the maxima, we have to calculate the number of maxima. So the last maxima will be formed at angle which is almost equal to 90 degree. For angle at 90 degree, we will see that we will find the nth maxima. So for this, if we put the theta as theta is equal to 90 degree, so we will say sin theta is equal to 1. So simply put the value of d, which is 5 lambda by 2 into 1 is equal to n lambda. So the value of which we are getting is n is equal to 2.5, which is not an integer number. So in between, from central maxima, that is n is equal to 0, we will get the first maxima, which is n is equal to 1, second maxima n is equal to 2. Then we will not get any maxima. Because the maximum distance or the screen which is covering, it is up to n is equal to 2.5. So if we get 3, n is equal to 3, then only we will get the third maxima. So we are getting 3 maxima here, and 2 maxima we will get n is equal to -1 and n is equal to -2. Total number of maxima which we are getting is 5. So in this case, the first option is the correct option. So we will mark first option is correct option. Total number of maxima is 5. Next, moving on to the next question. So radius of the first orbit in hydrogen atom is this much,
the kinetic energy, potential energy and total energy of electron in the first orbit. So first of all, we know that the kinetic energy is half mv square, as we know, and it is due to the velocity that there is velocity square cannot be negative. So kinetic energy is always positive. So first thing which we can eliminate two options from here, because kinetic energy is given as negative. So we can eliminate the two options here, and in any orbit kinetic energy is equal to total energy but with negative sign. So we are getting two options here. Kinetic energy is, first of all, kinetic energy is 13.6 plus 13.6 plus. So these two options, these two we cannot eliminate, these two options, this 2 and 4, or the best possible answers are 2 and 4. Again, going to the potential energy, so potential energy is double the kinetic energy. Potential energy is always double the kinetic energy. So here potential energy they have halved. So this cannot be possible. So only option is left is option number 2. So we know the relation, kinetic mod of kinetic energy is equal to mod of total energy is equal to half of mod of potential energy. This is the relation which we study in all the topics, in gravitation also, in modern physics also, and in case of chemistry also. We get this same relation for kinetic energy, total energy for any rotating object. Again, Bohr's second postulate implies the quantization of angular momentum. This is again, he told that angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. So correct option will be second option. Sorry, third option will be the correct option for this case, angular momentum conservation. So angular momentum of electron in any orbit will remain conserved. So moving on to the next question, an electron transition takes place from excited state to ground state in hydrogen atom. So basically, in this case, the electron is moving from outer orbit to the inner orbit. That means its radius is decreasing. If the radius is decreasing, we know that the kinetic energy is inversely proportional to radius. Kinetic energy is inversely proportional to radius. That means if radius is decreasing, kinetic energy will increase. Again, potential energy and total energy, if we see, we will say that it is minus of inversely proportional to radius and minus of inversely proportional to radius. So that means, it is decreasing in the negative side. It is increasing. Potential energy and total energy is increasing in the negative side. So we can simply say that they are decreasing. They are decreasing. For taking the example, if initially it was -2, then it is -4. So it is overall decreasing. Okay. So the option which is correct for this is its kinetic energy increases, but potential energy and total energy decreases. So option number first is the correct option, which we can see from this one. Okay. So moving to the next question. Next question says an N-type and P-type semiconductor can be obtained respectively. So basically, to obtain the N-type semiconductor, we have to add pentavalent impurity. We have to add pentavalent impurity. So in this case, the phosphorus is pentavalent and indium is trivalent. So this correct option will be option number 3. Correct option will be option number 3. So to obtain N-type semiconductor, we have to add pentavalent impurity, because when we add impurity which have 5 electrons in the outermost shell, so there will be an extra electron will be left free. In case of P-type semiconductor, we have to add trivalent. So in this case, extra hole will be generated. The correct option for this case will be group 13 element is indium. So option number 3 will be the correct option. Moving on to the next question. In which of the following figure diode is reverse biased? Reverse biased, we know that for the reverse biasing, we have to this side is P type, this side is N side. So we have to connect N side with the lower terminal, lower potential, and P side to the higher potential. So if you will see, this is 5 volt and this is grounding, that is 0 volt. This is grounding, that is 0 volt. This is 15 volt, this is 10 volt. That means positive terminal, negative terminal, positive, negative. So these two options is not, these are forward biased. Again, when you say the 20 volt and -5, that is, it is higher potential, it is again lower potential.
So this is positive terminal, this is negative terminal, again forward biased, minus 20 volt, minus 10 volt, this is lower potential, this is higher potential. So option number 2 is the correct answer in this case, in which this is reverse biased. So we will click this answer and move on to the next question. Again, coming to the next question. A wafer of pure germanium crystal has two parts, X and Y. The int X is obtained by doping with arsenic and Y with indium. So we are adding arsenic and indium. So arsenic is a pentavalent impurity and indium is a trivalent impurity. Arsenic is a pentavalent and indium is a trivalent. So we will obtain this side as it is N, this will be P. This will be N and this will be P side. So N side and P side. So if we have to draw its diagram or circuit diagram, we can draw it like this. This is N side of the semiconductor and this is P side of the semiconductor. So in this case, you will find that first of all, X is N type, X is P type. This is not possible. This is not possible. This is X is N type. These two options can be possible. P is Y is P type, Y is P type. Again, the junction is forward biased, junction is reverse biased. So this is the higher potential, this is the lower potential. So the flow of current will be like this, which is not possible. So it is reverse biased. It is reverse biased. So option number 4 is the correct option in this case. Option number 4 is the correct option in this case. Moving on to the next question. So from the graph, the angle of deviation versus angle of incidence for equilateral prism. So in this case, the equilateral prism is given. For the equilateral prism, angle of prism is equal to 60 degree. So this information is already given, and we have seen the refractive index of the material of the prism is. So we have to find the refractive index of the material. For refractive index of the material, we have to use a formula for refractive index, where we say mu is equal to sine of angle of prism plus delta minimum divided by upon 2 divided by sine of angle of prism divided by 2. From the diagram, you can say that the angle of minimum angle of deviation is 60 degree. Minimum angle of deviation is 60 degree. It is given in the diagram itself. Delta minimum, delta versus I. We have given graph of delta versus I, and from the graph you can find the delta minimum as 60 degree. So we will write delta minimum is equal to 60 degree. So putting the values, we will find the refractive index, which is sine A is 60 and delta min is 60. So this is 120 divided by 2, which is 60 divided by A by 2, which is sine 30. Sine 30 for sine 60 is root 3 by 2. Sine 30 is 1 by 2, where mu is root 3. So correct option in this case will be root 3. So option number 3. Option number 3 is the correct answer. Moving on to the next question. Which of the following circuit is correct for verification of Ohm's law? So first of all, we know that the ammeter should be connected in series with the circuit and voltmeter should be connected in the parallel. So we will check whether here see ammeter is connected in parallel, ammeter is connected in parallel. So we have simply eliminated two options. Again, positive terminal of the voltmeter should be connected with the positive terminal of the battery. See here, voltmeter का positive terminal बैटरी के positive terminal से connected है. So this option is again wrong because negative and positive are connected. So this is the correct answer. Moving on to the next question. Again, match the following physical quantity given in the list 1 with the dimensions expressed in terms of mass, length and time. So we have to simply find the dimensional formula in the given cases. So we will not calculate the dimensional formula of all the physical quantities. We will just check one on one and check it with the given options. For torque, so torque, which is force into displacement, that is F into R cross F. So we have to find the dimension. So we are not writing the vector equation or anything. We will simply write force is nothing but kg meter per second square, and distance is meter. So we get kg meter square second minus 2, which is
ml square t minus 2. So first option is, first matching will be the ml square t minus 2. So ml square t minus 2. So this is option number 4, ml square t minus 2, option number 4. Option number 4. So one is option number 4. So in case this is option number 4, this is option number 4, this is option number 4. So we have eliminated option number 4. ठीक है, option number 4th option is wrong because A is matching with 2 here. Again, next we will see the second one, gravitational constant. For gravitational constant, we know the formula, force is equal to G m1 m2 upon r square. So force is again ml t minus 2, and r square is L square, length square, this is m square. We will get gravitational constant. So the gravitational constant will become m minus 1, because minus 2 minus 1 was m minus 1, L cube t minus 2. Matching, see the matching options which are matching. Gravitational constant is m minus 1 L3 t minus 2. m minus 1 L3 t minus 2. So m minus 1 L3 t minus 2, this is the third option. So check whether here B is 2, B is 1. So these two options are eliminated and B is 3. So second option is the correct option. We will not check this further. We will not check the further options, capacitance and Planck constant, because we have successfully eliminated 3 options. Only one is left. So we will move on with this question. Again, in this question, we have been given information about the car covers first half of the distance between two places at 40 km per hour and other half at 50 km per hour. So here the length is covered is same. Length covered is same. You can use the direct formula, which is V average is equal to 2 V1 V2 upon V1 plus V2, or you can use the methods of normal calculation. So we will use the formula here, and we will find out कि V average is equal to 2 V1 V2 upon V1 plus V2. So if the length covered is equal, covered is equal, average velocity is harmonic mean. If the time is equal, then average velocity is V1 plus V2 upon 2, simply V1 plus V2 upon 2. So we will use the formula like 2 into V1 is 40, V2 is 50 divided by 40 plus 50 is 90. Again, cut this out. This is 400 divided by 9. 400 divided by 9. 400 divided by 9. So in this, when you will solve this calculation, you will get option number 2 as the correct answer. 400 divided by 9 is 44.44. 44.44. So this will be the correct answer. Okay, moving on to the next question. Two bodies are projected with the same initial velocity. If one is projected at angle 30 degree, another is projected at angle 40 degree to the horizontal, then the ratio of maximum height. So we know that the maximum height is u square sine square theta upon 2g. U square sine square theta upon 2g. So we will use the formula for maximum height, and u square sine square theta upon 2g. So for the first body, h1 is equal to u square sine square theta divided by 2g. Again, for second body, h2 is equal to u square sine square theta 2 we will write here, because the initial velocity is same. The u square by g is cancelled out. We can say h1 upon h2 is equal to, so first is 30 degree, second is 45 degree. So sine square 30 degree divided by sine 45 square. We will write this way. So sine 30 is 1 by 2. Sine 30 is 1 by 2, and sine 45 is 1 by root 2. So squaring both of them, we will get 1 by 4 divided by 1 by 2, and again this will get cancelled out and we will get 1 by 2. So option number, second option is the correct option in this case, that is
1:2. That is 1:2. Next question. It is saying that the velocity of the particle moving along x-axis is given as v is equal to, velocity of the particle moving on x-axis is given as v is equal to x square minus 5x plus 4. So velocity as a function of displacement it is given, and where x denotes the x coordinate of the particle, we go velocity as function of x. So magnitude of acceleration of the particle when the velocity of the particle is 0. So we know that the relation between velocity, acceleration and displacement in this form is given as v dv upon dx. Acceleration is v dv upon dx. We know this relation. If we put velocity as 0, then acceleration will also be 0. If velocity is 0, then acceleration will also be 0. So in this case of our answer will be 0, which is option number 3. We do not have to differentiate this. We don't have to find dv upon dx, or we don't have to find when velocity is 0. We don't have to find this also, because simply we will put v as 0, we will get a as 0, option number 3. Next, in this case the question is saying a man weighs 80 kg, he stands on weighing scale in a lift which is moving upward with a uniform acceleration of 6 meter per second square. What would be his weight in kg? So first of all, lift is moving upward. Lift is moving upward. That means pseudo force will be acting downward. So solving this question, lift is moving upward and pseudo force will be downward. So first of all, lift is moving upward with 6 meter per second square. And here is the weighing machine. Here is the man. And the net force which he is exerting on the ground is mg plus, since lift is going upward, so pseudo force will be downward, which is equal to ma, So the net weight of person experienced by weighing machine will be mg plus a. We know that the pseudo force will be in opposite direction, g plus a. So we will write mass is 80 kg, g plus a is 16, or we will simply write 10 plus 6. And one more thing, weighing machine does not measure the mass, it measures the force it experiences. It measures the force. So this is the force experienced by the weighing machine. This is the force experienced by weighing machine. Suppose your weight is 1000 Newton. Your weight is 1000 Newton. Then when you divide it by acceleration due to gravity, you will get 100 kg. You will get 100 kg. So weighing machine is not calibrated for the accelerated body. It is calibrated for object at rest. So when you will measure your weight on weighing machine and you are exerting a force of this much, which is 80 into 16 newtons, then the weight, the mass which it will show, will be mass reflected or mass shown by weighing machine will be, simply it will be force upon g. It will be force upon g, because it doesn't know whether object is accelerating or not. So it will simply divide every force by 10 and it will give you the answer. So first of all, we will write 80 plus 10 plus 6, which is, and divided by 10. So simply cut these two values, and in this case you will get this value at 16 into 8 is 128 kg. So the mass which is reflected here in case of accelerated lift is 128 kg. So option number 4 is the correct answer. Option number 4 is the correct answer in this case. Next, moving to the next question. This is a simple question of equilibrium. So we will write all the forces, draw the direction of all the forces, and find the tension. What it has asked, the tension of this horizontal string, tension in the horizontal string. So we will find the tension in the horizontal string. So let's suppose this tension is T1, then this is T2. Again we will break the component. This mg is acting vertically downward, then here
it will be a mg force. Again, this is we will break this T2 into two component, that is T2 by root 2, T2 by root 2, क्योंकि ये 45 डिग्री पर है, T2 by root 2, T2 by root 2. So from here we will say T2 by root 2, since the net force is 0, T2 by root 2 is equal to mg, T2 by root 2 will be equal to mg, so T1 will be mg, T1 will be mg. So option number 3 will be our required answer. Okay, moving to the next question. Two bodies with kinetic energy in ratio 3:1 are moving with equal linear momentum. So in this case, linear momentum is same. Linear momentum of the bodies are same. Are moving with equal linear momentum. The ratio of their masses. So their kinetic the ratio of kinetic energy is given. Ratio of kinetic energy is given. You can see the question. Two bodies with kinetic energy in ratio 3:1 moving with equal linear momentum. So we know the relation between kinetic energy and linear momentum. Kinetic energy is equal to p square upon 2m. So for two bodies, we will write kinetic energy of the one is equal to momentum of the one or mass of the one. Kinetic energy of the second body as p2 square upon 2m2. So since we know that they have their linear momentum is equal, that is p1 is equal to p2, and their ratio of their kinetic energy is 3:1. So we will simply write kinetic energy 1 upon kinetic energy 2 is equal to 3 divided by 1, which is again, we can if we will divide these two equations, we can simply cut p1 and p2 square and 2 and 2. We will get this as m2 upon m1. This is the ratio of masses, m2 upon m1. So ratio of masses, it has asked, we are getting kinetic energy 1 upon kinetic energy 2 as 3:1, and here ratio of masses m2 upon m1. So we will reply m1 upon m2 as 1:3. m1 upon m2, because the ratio in which the kinetic energy is given, we will respond in the same ratio. So the option second is the correct option, 1:3. Again, moving to the next question. Horizontal force of 5 Newton is applied on a stationary body of mass 10 kg, which is initially at rest. Initially at rest, that means initial velocity is given 0, and horizontal force of 5 Newton is applied on a stationary object. So we are applying a force of 5 Newton of 5 kg mass, and its acceleration will be 1. Force is equal to mass into acceleration. The change in kinetic energy of the body in 10 seconds. So we will simply find the kinetic energy, since initial velocity is 0. So kinetic energy initial is also 0. So we find the kinetic energy final, and this change in kinetic energy will be k final minus k initial. And since k initial is 0, so the final kinetic energy which it will obtain will be the change in kinetic energy. Okay. So solving this at t is equal to 10 second. T is equal to 10 second. What will be its velocity? We will simply use the equation v is equal to u plus at. So initial velocity is 0, acceleration is 1, which is 10 meter per second. So final velocity is 10 meter per second. So kinetic energy final will be half mv final square. Kinetic energy final will be half mv final square, which is half of mass. Mass is given as 5 kg. 5 into final velocity is 10. So 10 into 10, which is we will simply cut it. 5 into 5, 25 into 10 is 250 joule. 250 joule. So answer will be option number 4 will be 250 joule. Option number 4 is 250 joule. Next, going on to the angular momentum of a moving body remains constant. So just like force is equal to change in linear momentum, again torque is nothing but change in angular momentum. So if the net applied force is applied, then angular momentum may or may not be constant, because we don't know whether this net force is the torque applied by this net force is 0 or not.
net external torque is applied. If the external torque is applied, then the angular momentum will be, by default there will be some change in angular momentum. नेट प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है. द फोर्थ ऑप्शन इज नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉट अप्लाइड. व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, जब बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं रहेगा तभी उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, तभी उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. तो ऑप्शन नंबर 4 इन दिस केस इज द करेक्ट आंसर. अगेन this question is again related to the previous question also. Again previous question itself, like conservation of angular momentum. When there is no torque, angular momentum of the rotating object will remain constant. So in this case what it is saying ki if earth were to suddenly contract to half of its present radius, if the radius of earth is reduced to half, if the radius of earth is reduced to half, what would be the diameter of, what would be the duration of the day, what will be the duration of day. So they are not changing the mass of the earth, but they are reducing the radius to half. So we know that if we reduce, the angular momentum of the earth will remain same. So we will write initial angular momentum is moment of inertia of earth into angular velocity, which is, assuming the earth has a spherical object, we will write 2 by 5 mr, simply 2 by 5 mr square into omega, we will write 2 pi by, time period of earth is currently 24 hours. It is currently 24 hours. Again, final angular momentum will be I dash into omega dash, which is again 2 by 5 m, radius, changed radius, we are writing r dash into 2 pi by time period, new time period. And because there is no torque, by conservation of angular momentum, we will write L initial is equal to L final. So simply write 2 by 5 mr square into 2 pi by 24 is equal to 2 by 5 m r dash. R dash is half the radius of earth. करंट रेडियस का आधा कर दिया इसने, m by r by 4, r square by 4 into 2 pi by time period. So all these values are getting cancelled out. So we will simply see 4, we will cut out the 4. So from here we will get t is equal to 6 hours. This is a very standard question. You might have studied in your classes. This is the very standard question, and most of the students have learned this question. They already knew the answer, and just want directly tick it and move forward without solving. Again, the same from the gravity part. The question is, imagine a new planet having a same density as that of Earth, but it's 2 times bigger than the size of Earth. If acceleration due to gravity on the surface of the Earth is g, and that on the surface of the new planet is g dash. So in this question, density is same, and the other information is it is 2 times bigger than the Earth in size. That means radius is double the Earth, radius of Earth. Density is same, radius is double the density of Earth. Again, we will use this information. In this question, and if the acceleration due to gravity on the surface of Earth is g, so we will simply write the equation of g on any planet, which is g on any planet is gravitational constant, mass of the planet divided by radius of planet ka square. So since the density is same, so we will convert this formula in the form of density, which is if you multiply r and r, you can simply say that g is proportional to, since g is constant, again it is m upon r cube. M upon r cube is density, means if you will multiply with 4 by 3 pi, 4 by 3 pi and upward onward, since it is a constant, it doesn't mean anything, means it will not impact this question. M upon r cube into r. So we will write gravitational acceleration due to gravity is proportional to rho into r. Acceleration due to gravity is proportional to rho into r. So this for the first planet, that is Earth, which is g.
for the second planet, that is G dash, is proportional to density of the second planet into radius of the second planet, which is 2r. You will simply divide it and get it as G dash is equal to twice G. G dash is equal to twice of G, which is option number 3. So we will mark this answer and move on to the next question. Sorry. G dash is equal to 2G. Moving to the next question. Suppose the acceleration due to gravity on the Earth's surface is given is G, and that on the surface of Moon is G dash. So, and mass and m kg passenger goes from Earth to the Moon in a spaceship moving with a constant velocity. Okay, he is moving with a constant velocity and he is going from Earth to the Moon. So net force on the person, suppose if he is going from Earth to Moon, then the net force on this person will, first of all, it will change because when he is closer to the Earth's surface, he will experience gravity. As he goes away from the surface, the gravitational force of the Earth will decrease, and when he is going toward the Moon, gravitational force due to Moon will increase. So first of all, which is inversely proportional, that is gravity G is inversely proportional to r square, that is distance from the Earth's surface. So the curve will not be a straight line, so we cannot obtain the first curve A. Again, at midpoint, somewhere in the midpoint, there comes a point when the net force, since mg and mg dash, both the forces are shown as positive. There is nothing such that negative force, because mg or mg dash both are positive. So at some point, the force due to Earth and force due to Moon, this will be equal. First of all, when he is going from away from the Earth, the net force will keep on decreasing, and at a point where net force, this will be equal, the net force will be 0, he will experience a 0 force here. Now अब ये इस पॉइंट से आगे जाएगा तो जो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज़्यादा हो जाएगा. मून के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा, अर्थ के कारण एक्सपीरियंस जो फोर्स कर रहा है वो कम हो जाएगा. सो नेट फोर्स विल अगेन कीप ऑन इंक्रीजिंग टूवर्ड mg dash. So ऑप्शन नंबर सी, द ग्राफ नंबर सी इज द करेक्ट ग्राफ फॉर दिस केस, बिकॉज ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर माइनस में फोर्स शो कर रहा है, निगेटिव में, और फोर्स या नेट फोर्स विच इज डिक्रीजिंग वो डिक्रीज होकर के इट कैन बी मैक्सिमम मिनिमम विच इट कैन टेक द वैल्यू इज 0, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सो विच इज 3. Next, again instrument fitted in the carburetor of a automobile. So we are talking here about atomizer or something where the liquid is lifted in the pipe due to when the air above that pipe, in case of sprays, when the air move with a higher velocity, then in case of spray, here low pressure is developed, and again liquid in the pipe rises up, and again it moves with the air and sprayed. Okay, so it is concept of atomizer, and we have already discussed in detail in the class in this case. So we will simply see Pascal's law is force or area, pressure throughout the liquid will be constant. It is used in hydraulic lift and something, so it will not be our correct answer. Again, Bernoulli principle is the correct for this, because velocity, sum of all the pressure hits, velocity and sum of all the energies will be constant in case. Newton's law of cooling is not possible, again क्योंकि it is responsible for changing the temperature, and Archimedes principle is again not possible because it is used for ships. This is the concept of atomizer in case of carburetor. So Bernoulli principle will be the correct answer for this case. Moving to the next question, question number 30.
Question number 30 says that there are two wires of same material, same length, while the diameter of the second wire is 2 times the diameter of the first wire. So same material, same length, they have only change in diameter. So applying same load will be, ratio of the extension produced. So this question is from the, simply we know that Young's modulus is equal to stress upon strain. Stress is nothing but force per unit area, and strain is change in length upon length. So since the material of the wire is same, so Young modulus will be same. Wire is made up of same material, so Young modulus for both the wire will be same. Same length, that means L will be same. The diameter of the second wire, since diameter is different, we will say A1 is equal to pi d square, and A2 is equal to diameter of the second wire is 2 times, that means diameter of the second wire is 2 times diameter of the first wire, which is pi 2d square. We will divided by 4 again. Then the ratio of the extension produced. So since force and load applied, applying same load, force and length are same, we will simply say, and Young's modulus is also same. So we can write this A into L, product of A1 L1, A area into change in length, that is Young's modulus is equal to FL upon A2 into change in length of L2. Young's modulus is equal to FL upon A1 into change in length of L1. So this non dividing, these three terms are same, so we can write A1 delta L1 is equal to A2 delta L2. So when area of the first wire is A, then area of the second wire will be 4 times the area of the first wire, since diameter is double, and extension is first wire is delta L2, extension is second wire is delta L1. Cutting these two, so delta L1 upon delta L2 is equal to 4:1. Delta L1 upon delta L2 is 4:1. So we are getting the fourth option as the correct option in this case. Fourth option is the correct option. So moving on to the next question. 4:1. Okay. Okay, so question number 31. In a capillary tube experiment, a vertical 30 centimeter long capillary tube is dipped in a water. Water rises up to the height of 10 centimeter due to capillarity. Okay, so the excess pressure is making the water to rise up to the height of 10 centimeter. If this experiment is conducted in a freely falling water in an elevator, so this is a very interesting question. Then the length of the water column will become, actually the liquid which is rising is due to curvature of the meniscus, and when there is a curvature, then there is a change in pressure. To balance that pressure, the liquid rises, and the net force, when you see that when the liquid is rising, so due to this rise in height h, we will simply say that there is an excess pressure of rho gh. Okay, so this excess pressure is, this rho gh is balancing, the pressure drop 2T by R, that is 2T by R. This rho gh is balancing the excess pressure 2T by R. Now, if this apparatus is made to fall in a lift, now if this is made to fall in a lift, then here this G effective will be 0. G effective will be 0 because net acceleration due to gravity will, in case of freely falling object, will be 0. Then in this case the water will keep on rising, because due to this rho gs, the net pressure at this point has no effect.
at this point the net pressure rho gh, since g is 0, the net pressure will be 0. So liquid can go at up to any height, that is up to infinity. It will, if the liquid will rise up to the infinity, then that liquid will not exert pressure at its bottom. Okay, so then we will say that the liquid will keep on rising upward, but since it is a freely falling object and we don't see any option as infinity, and at the top of when it will reach the top of the capillary tube, it will form some other shape and it will adjust the pressure such that net pressure is balanced. So then the answer will be 30 centimeter in this case. It will reach up to the top and change the radius accordingly. Okay. Next, moving on to the next question, question number 32. In a thermodynamic process, which of the statement is not true? Which of the statement is not true? So in an isothermal process, okay, we have to tell not true. तो isothermal process the temperature remains constant, सही है ये, तो ये अपना option नहीं required. In adiabatic process the isobaric process the volume remains constant. तो isobaric में pressure constant रहता है, volume constant नहीं रहता, तो this is not true. This is not true. In adiabatic process the system is insulated, क्योंकि heat loss adiabatic के केस में 0 होना चाहिए, तो सिस्टम को insulate कर देते हैं. और in adiabatic process PV is equal to power is a constant. So these three options are correct and this only is not correct. So this is our required answer. ठीक है. The graph of pressure versus volume of 1 mole of ideal gas at a constant temperature is constant temperature. Temperature is constant. That means PV is equal to constant. And when for P versus B graph, P is inversely proportional to V. That is rectangular hyperbola. So option number 4 is PV graph. Next, moving to the next question, the mass of 1 kg is executing SHM. Its displacement is given by x is equal to a cos omega t plus phi. Okay, so value of a is 6 centimeter. Value of a is 6 centimeter. Again, we will write this equation, x is equal to a cos omega t plus phi. So from here we will simply obtain amplitude is equal to 6 centimeter and omega is equal to 100 radian per second on comparing it with the standard equation. So what is the maximum kinetic energy? Again, maximum kinetic energy, for maximum kinetic energy we have to write the maximum velocity. So V max for a body executing SHM is given by A into omega, which is amplitude into omega radial angular velocity. So amplitude is 6 centimeter. So for 6 we will write 6 divided by 100 meters. 6 centimeter, we can write 6 centimeter is equal to 6 divided by 100 meters and 100 radian per second. So we will get this as 6 meter per second. This is the maximum velocity of the body. This is the maximum velocity of the body which is executing SHM. Now we will write the kinetic energy. Kinetic energy will be half max into maximum velocity का square into mass. So mass of the body is 1 kg. So kinetic energy maximum is equal to half m into V max square, which is half m is 1 into V max is 6 square. Again 36 upon 2 is 18 joule. So option number 4 is the correct option in this case. Next, moving to the next question. The source of frequency mu gives 6 beat per second when sounded with the source of frequency 200 Hertz. Okay, for if the frequency is mu and when it is sounded with 200 Hertz frequency, we are getting 6 beats. We are getting 6 beats. The second harmonic of the frequency 2 mu of the source gives 8 beat per second when sounded with a frequency of 420 Hertz. So value of mu, simply we are getting the number of beats which we are getting. So we can write there the relation between source frequency and beats is given as mu is equal to 200
plus minus number of bits. Again, mu can be 200 plus minus number of bits. In the second case, 2 mu can be 420 plus minus number of bits. So this can have a value of 206 or 194. So mu can be 206 or 194. In this case, this 2 mu is again 428 or 412. So we can write 2 mu is equal to 428. 2 mu is equal to 428 or 412. Okay. So 428, if we are taking 428, then mu in this case will be 428 divided by 2, which is 214 hertz. And in the second case, 2 mu is equal to, we will simply write 412 divided by 2, which is 206. So since 206 hertz frequency is common in both the cases, this will be the required answer. This will be our required answer, which is option number 2. Moving on to the next question. The following are the expression for the few process. The following are the expression for the few process taking place in nature. So free expansion of gas. Again, free expansion of gas. If the gas is allowed to expand outside, pressure is as vacuum, pressure is 0, then gas will expand freely. This is allowed by the nature. This can happen in nature, and this happens in the nature. The combustion of mixture of petrol and air ignited by spark. All the cars are working on this process only. This is possible, and this is also possible. If you will mix petrol with the air, that is oxygen, and add some spark into it, it will burn. Leaking of gas from the kitchen cylinder. So very simple, when the gas in the kitchen cylinder is filled at a higher pressure, outside pressure is low, the air will move from higher pressure to lower pressure. These three processes is a natural process. The transfer of heat from one heated part of the liquid, again it is also a natural process. So which among these is irreversible? All of them are irreversible because they are happening naturally. To transfer heat from colder to the heated liquid, colder region to the hotter region, we need refrigerator. Okay. To remove the heat from the colder place to the hotter place, we need air condition. So all these processes, to fill the gas into the kitchen cylinder, again we need to fill it with the pressure. Okay, so these processes can take place naturally, but to again reverse this process, we have to apply some external machine or something. So all the processes are irreversible. Okay. All the four processes are irreversible in nature. Again, moving to the next question. So an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 power 4 Newton per Coulomb from rest. The time taken to cover this distance in second is this much. So we have to find the, okay, so since the electron is in an electric field, it will accelerate and it will experience a force which is Q into E. Q into E, we will simply write the equations first, then. So first of all, electron fall through a distance of 1.5 centimeter in uniform electric field of magnitude. The uniform electric field is given as 2 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb, and from rest. The time taken to cover this distance in seconds. To cover this distance in seconds. तो कितना समय लेगा? कितना distance? 1.5 centimeter. Distance is equal to 1.5 centimeter, which is again we will write as 1.5 divided by 100 meter. Okay, so here we have given information as mass of electron and charge on electron. These two information is given. So first of all, we will write the force. Force is equal to E into capital E, and acceleration is equal to force upon mass of electron, which is E divided by m. So what we have to find
is time taken to cover a distance of 1.5 centimeter. Time taken to cover a distance of 1.5 centimeter. So time taken to cover this much distance, we can write simply use the equation ki S is equal to ut plus half at square. So distance is 1.5 centimeter, that is 1.5 divided by 100 meter, which is initial velocity is 0 and half acceleration is charge on electron, which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Electric field intensity is given as 2 into 10 to the power 4 divided by mass of the electron is given as 9.1 into 10 to the power minus 31, okay, into T square. Okay, when you see the option, the interesting thing which we see here, when you see the option, none of the power are same. 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 6, 10 to the power 9, 10 to the power 6. So if we simply see the powers in all the questions, if we simply find कि मतलब कितना approximately 10 power minus 9 हो सकता है, 10 power minus 8 हो सकता है, 10 power 10 हो सकता है, ठीक है. अगर हमको पावर एक मिल जाए, पावर का आइडिया मिल जाए, instead of solving this complete equation, we just get the idea of the power, so we can correct this question because 10 power 9 होगा, positive होगा, negative होगा. तो अगर इसको हम simplify करना चाहें, तो we can for once we can eliminate these all values, numbers. We can just see the power. So if you will see here, that is 10 to the power minus 31. Again 9.1 you can write as 10. Here 10 to the power minus 19, minus 19. Minus 19 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो it will be 10 power plus 19, that is minus 31 plus 19. Again here 10 to the power 4, 10 power 4 को जब ऊपर ले जाएंगे, एक बार बस हम पावर का आइडिया ले लेते हैं. 10 पावर माइनस 31 प्लस 19 माइनस 4, ठीक है. तो अगर हम इसको देखें माइनस 31 प्लस 19 और माइनस 4, ओके, माइनस 31 माइनस 4 इज माइनस 34. इसमें 19 को अगर हम ऐड करें और इसके बाद इधर 100 भी डिवीजन में है, ये वाला 100, इस फिर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है. तो ओवरऑल जो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर 10 भी है, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस ऑफ 18 माइनस 31. तो पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा है, ये नेगेटिव भी रहेगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं पॉसिबल है. और अगर इसको तुम देखो तो दिस इज अगेन टी स्क्वायर इज समथिंग 10 पावर माइनस 18, विच इज व्हेन यू विल रूट दिस थिंग, दिस विल बी 10 टू द पावर माइनस 9. तो हम सिंपली यहाँ पर बहुत ज़्यादा गणित ना लगा करके थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और सेकेंड ऑप्शन हमारा दिख जाएगा. इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द कंप्लीट कैलकुलेशन यू कैन सिंपली चेक द पावर्स. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब. व्हाट विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द फेसेस ऑफ द क्यूब, दैट मीन्स ऑल द फेसेस जितना दिख रहा है हमको उनके. अगर एक साइड पे है तो सिंपली गॉस लॉ ये बोलता है कि चार्ज इनक्लोज्ड पर अपॉन इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फ्लक्स. तो फ्लक्स इज इक्वल टू Q upon epsilon naught. Flux is equal to Q upon epsilon naught. So if we have to cover this, we will be needing 3 additional cubes. That is, flux through one cube will be Q by 4 epsilon naught. 4 क्यूब से फ्लक्स कितना होगा, Q by epsilon naught. तो एक क्यूब से कितना हो जाएगा, Q by 4 epsilon naught, which is option number 3. Which is option number 3. This is the correct option in this case, question number 38. ठीक है, moving on to the next question. तो next question में भी same, it is based on flux, so we will use the Gauss theorem. Gauss theorem ये बोलता है कि consider the 3 point charges. Okay, consider the 3 point charges. In this case, minus 2q and minus q. Again, instead of solving the complete question, we will see. Since it is a match the following question, we will see whether we can eliminate any question or not. So consider the 3 point charges minus 2q, q minus q, and 3 surfaces S1, S2 and S3 are shown in the figure. Match the entries of list 1 with that of list 2.
तो नेट फ्लक्स थ्रू S1 में नेट चार्ज इनक्लोज्ड इज -2q प्लस q, दैट इज -q, नेट चार्ज इनक्लोज्ड इज -q, दैट मीन्स -q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो S1 इज 2. Net flux through S2. So just to check which one is S1 and S2, we will see the question from the page. So S1, okay, this surface is S1, this surface is S2, and this surface is S3. Okay, so net flux through S1 is -2 and net flux through S2 is -q by epsilon naught. This is S2, so -q, that is net flux through S2 will be 0 because net charge enclosed is plus q and minus q. So we have already got two matching options. We will check again. The third one will be by default, this will be C1, so C3, C1, C1, again A2, A3, A2. So option number 4 is the correct option. A2, A4. Option number 4 will be the correct option. Next, moving to the next question. It is based on the parallel plate capacitor. So we'll read the question for you. A parallel plate capacitor has a uniform electric field. A parallel plate capacitor has a uniform electric field in a space between the plates. If the distance between the plate is d and area of each plate is a, distance between the plate is d and area of each plate is a, the energy stored. So we know the energy stored inside, the energy stored per unit volume. We know energy stored per unit volume is equal to half epsilon naught into E square. Since the parallel plate capacitor is a uniform electric field, we know that epsilon naught is a constant, and again distance between the plate is given as d and area of each plate is a. So we can simply write the volume of this capacitor. These two are the capacitor plates. Each area is a, distance is d. The volume of this capacitor plate will be a into d. So you can write energy stored is equal to half of epsilon naught into E square into volume, which is a into d. So which one is showing the correct answer is, it's option number 3, which is correct, half epsilon naught E square into a into d. Next, in the circuit shown in the figure, the potential difference across 4 microfarad capacitor. Potential difference across 4 microfarad capacitor. So we have to find the potential difference across this capacitor. So potential difference across this capacitor, since it is a 12 volt capacitor, we will simply find the net effective capacitance. So for these two are connected in parallel, effective capacitance will be 12. So we can make this diagram as a 4 and 12. 4 microfarad and 12 microfarad. Since Q is equal to CV, so Q will be constant. In these two capacitors, charge will be constant. Charge constant रहेगा तो C is inversely proportional to V. C is inversely proportional to V. Charge अगर constant है, C is inversely proportional to V. तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा, सॉरी जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा, वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कम. जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा, वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कम. और रेशियो विल बी इन्वर्स रेशियो. अगर यहाँ पर अगर इनको रेशियो देखो तो दिस इज 1:3, तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इन रेशियो ऑफ 3:1. अगर यहाँ पर x का ड्रॉप होगा तो यहाँ पर 3x का होगा. ठीक है, तो इधर अगर पोटेंशियल ड्रॉप x का हो रहा है तो यहाँ पर कितने का होगा, 3x. एंड वी नो दैट x प्लस 3x इज इक्वल टू 12, विच इज 4x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 3 वोल्ट. x इज इक्वल टू 3 वोल्ट, तो यहाँ पर 3x का ड्रॉप हो रहा था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट का ड्रॉप. ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so electric dipole of dipole moment P is placed in a uniform electric field. Again, mark the word uniform. Uniform, that is the electric field is constant. Then which of the following statements are correct? So statement 1 is torque is P cross E. So if the dipole is in a electric field, then the torque experienced by it will be P cross E. So it experience torque करेगा P cross E. The potential energy of the dipole is minus P dot E. ये भी सही है.
और द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज नॉन जीरो। अब देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डाइपोल को कैसे भी रखो तो यहाँ पर अगर QE चार्ज इधर लगेगा तो इधर चार्ज QE लगेगा और नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा। नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा? जीरो। तो दिस स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। सो स्टेटमेंट 1 and 2, दिस स्टेटमेंट 1 and 2 इज ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। A 200 joule of work is done in moving a charge of 5 coulomb from point A, where potential is minus 20 volt, to point B, where potential is V volt. तो work done charge और potential difference में जो relation है that is work done is equal to charge into potential difference। और potential difference को हम लिखते हैं V final, कोई भी difference हो हम लिखेंगे V final minus V initial। तो वर्क डन जो हमने किया दैट इज 200 जूल और चार्ज कितना था 5 कूलम और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस इज वी डोंट नो, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस 20 वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम 200 डिवाइडेड बाई 5 करें तो वी विल गेट 40 इज इक्वल टू V माइनस माइनस प्लस 20। तो दिस इज 40 माइनस 20 विच इज V वोल्ट, दैट इज 20 वोल्ट। तो इन V फाइनल की वैल्यू कितनी है? 20 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द फिगर शोन द वैल्यूज ऑफ करंट I1 I2 I3 रिस्पेक्टिवली। तो हमको I1 I2 और I3 का वैल्यू बताना है। तो सिंपल एक नेट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज कर लो, चाहे किरचॉफ लॉ यूज कर लो, नेट चार्ज एट द जंक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर इधर जा रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा? 4 एम्पियर, दैट इज यहाँ पर बचेगा कितना? 4 एम्पियर। तो I1 इज 4, तो I1 यहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, दैट इज ये दोनों तो गया। ठीक है, I2 की अगर हम बात करें तो इधर से 4 फ्रॉम द 4 एम्पियर 1.5 एम्पियर इज गोइंग इन दिस ब्रांच। तो यहाँ बचा कितना? 2.5 बचा। तो 2.5 इधर दिख रहा है, 2.5 इधर भी दिख रहा है, जिसका मतलब हमको I2 I3 को भी चेक करना पड़ेगा। तो 2.5 में 1.5 इधर चला गया तो बचा कितना? 1 एम्पियर। तो यहाँ पर 2 एम्पियर दिख रहा है जो कि गलत है, यहाँ पर 1 एम्पियर दिख रहा है जो कि सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग पर सेकेंड थ्रू अ फिलामेंट ऑफ बल्ब ऑफ 60 वोल्ट, फिलामेंट ऑफ बल्ब ऑफ 60 वॉट ऑपरेटिंग एट 120 वोल्ट। ठीक है, तो 120 वोल्ट पर बल्ब ऑपरेट कर रहा है, उसका फिलामेंट का पावर दे रखा है 60 वॉट। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? तो अगर हमको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम करंट इज 6.025 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम में 6.025 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम देख लेते हैं कितना करंट होगा, सॉरी कितना एम्पियर करंट होगा। तो 1 एम्पियर करंट में इतना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करंट निकाल लेते हैं। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। इस इक्वेशन को अगर हम यूज करें तो पावर ऑफ द बल्ब इज 60 वॉट, पोटेंशियल इज गिवन एज 120 वोल्ट और करंट इज आई। तो 60 और 2, तो करंट इज गिवन एज 0.5 एम्पियर, करंट इज गिवन एज 0.5 एम्पियर। तो 6.025 का हाफ कर देंगे तो 10⁻18 तो सेम ही रहेगा। 6.025 का हाफ कर देंगे मतलब पहले 1 एम्पियर करंट था तो वो 6.2 इंटू 10⁻18 था, तो 10⁻19 तो नहीं होगा। ठीक है, तो 10⁻19 वाले दोनों ऑप्शन पहले उड़ा दो, इसमें कुछ रखना नहीं है। तो करंट अगर 0.5 एम्पियर हो गया है तो चार्ज भी 0.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मतलब हाफ हो जाएगा। तो 3.1 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन अगर देखें तो द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट। तो पहला तो स्टेटमेंट अगर आप लोग खुद बताओ कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ भी दिखाया जाता है, रिलेशन भी बताया जाता है, तो
तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टिविटी के साथ कंडक्टर का टेम्परेचर के बाद साथ कंडक्टर का रेजिस्टिविटी चेंज होता है। तो ये बोला है कि इंडिपेंडेंट, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो हम स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, 2 भी चेक कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही बोला है कि क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विच कंट्रीब्यूट इन द फ्लो ऑफ करंट, विच जैसे टेम्परेचर के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं, टेम्परेचर के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो इससे करंट बढ़ता है, तो वो वाला रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, तो सेकेंड ऑप्शन तो ट्रू है। स्टेटमेंट 2 इज तो फॉल्स नहीं है, तो ट्रू, दोनों ही ट्रू नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये भी गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर डिक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 इन 4 सेकेंड एट शोन इन द ग्राफ। ठीक है, तो 10 से 0 करंट हो गया। फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन द गिवन टाइम इंटरवल। तो चार्ज अगेन, जब भी चार्ज इज नथिंग बट चार्ज को हम लिख सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, तो चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम। तो इस केस में देखो, अगर ये ग्राफ दे रखा है हमको, तो हम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लें, हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ दिस ग्राफ विल बी हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इज 4 सेकेंड, हाइट इज 10 एम्पियर, तो 4 इंटू 10 विच इज 20 कूलम। तो 20 कूलम is the correct answer in this case. Moving on to the next question. In a conducting region 10 to the power 19 electron and 10 to the power 19 proton, तो 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन और 10 to the power 19 प्रोटॉन मूव टू द लेफ्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, प्रोटॉन मूव करेगा, अल्फा पार्टिकल मूव करेगा, या कोई सा भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, हमको पता है करंट आएगा। तो हमसे पूछा क्या है कि रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सही है। तो हमसे चार्ज दे दिया, चार्ज का मूवमेंट दे दिया, पर सेकंड कितना चार्ज आ रहा है, उसके बाद उससे करंट कितना आएगा ये हमसे पूछ लिया। ठीक है, तो अब हम अगर इसकी बात करें तो कंडक्टिंग रीजन 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से देखो इधर कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 10 टू पावर 19 प्रोटॉन भी जा रहा है। तो 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन एक साइड गया, 10 पावर 19 प्रोटॉन भी उसी साइड चला गया, नेट चार्ज का फ्लो 0 हो गया। तो इसके कारण तो कोई चार्ज फ्लो हुआ ही नहीं, नेट चार्ज फ्लो इज 0। अब बचा कौन, 10 टू पावर 19 अल्फा पार्टिकल मूव टू द राइट पर सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली वो लेफ्ट जा रहा था, तो ये लेफ्ट। ठीक है, तो ये अब इधर जो है अल्फा पार्टिकल जा रहा है विच इज राइट। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है ट्वाइस द चार्ज ऑन प्रोटॉन, ट्वाइस द चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल कितना गया, 10 टू द पावर 19 अल्फा पार्टिकल मूव किया। तो वी विल सिंपली राइट करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज इनटू चार्ज अपॉन टाइम। तो टाइम कितना दे रखा है, 1 सेकेंड। तो करंट इज चार्ज पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ चार्ज पर सेकेंड अगर हम लिखेंगे जैसे क्यू बाई टी हम लिखेंगे, तो क्यू हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑन 1 अल्फा पार्टिकल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो एक अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। तो -19 प्लस 19 कट गया, तो 1.6 इंटू 2 इज 3.2 कूलम। तो टूवर्ड राइट ऑब्वियसली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो करंट किधर जा रहा होगा, 3.2 एम्पियर टूवर्ड राइट। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन अ मूविंग ट्रेन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है जो कि मूविंग ट्रेन में रखा हुआ है, और अ पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन एंड पर्सन ए सिटिंग in the train and person B is on the ground, observe the field due to this charge। तो अब देखो
जो चार्ज एट रेस्ट है, अगेन चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, तो हम रिस्पेक्टिवली बोलेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जब चार्ज रेस्ट पे होगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, जब चार्ज मूविंग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों शो करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ए के रिस्पेक्ट में चार्ज इज एट रेस्ट, ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए और चार्ज दोनों ही ट्रेन में है, तो ए के रिस्पेक्ट में चार्ज कैसा है, रेस्ट पे, तो ए विल ओनली ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए विल ऑब्जर्व बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, ये भी गलत हो गया, ये भी और ये भी। ठीक है, तो बचा कौन, पर्सन बी के रिस्पेक्ट में। देखें तो पर्सन के बी के रिस्पेक्ट में क्योंकि मूविंग है चार्ज, तो ही विल सी बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑप्शन नंबर 2 in this case will be the correct option. Moving to the next question. A proton, electron and alpha particle enter a region at a right angle to uniform magnetic field with the same velocity. If Rp, Re and R alpha are the radii of circular path of these particles, then so we can simply write the radius as mv upon qv. Radius of rotation is equal to mv by qb. Since velocity and magnetic field are same, so radius is directly proportional to mass upon charge. Radius is directly proportional to mass upon charge. So in this case we can simply compare the mass and charge. So mass of the electron is very small, that is 1 upon 1836 times the mass of proton. So in this case mass of electron is very small, so radius of electron will be स्मॉलेस्ट। सो सबसे कम इलेक्ट्रॉन का रेडियस होगा। फिर उसके बाद अगर हम मास वर्सेस चार्ज का रेशियो फॉर अल्फा पार्टिकल और इसमें प्रोटॉन का कंपेयर करें तो अल्फा पार्टिकल का मास अपॉन चार्ज का रेशियो, अल्फा पार्टिकल के लिए फॉर अल्फा पार्टिकल मास इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज इज ट्वाइस इलेक्ट्रॉन विच इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो द ऑप्शन विल बी, करेक्ट ऑप्शन विल बी second one. Moving to the next question. Biot-Savart law indicates that the electron moving with the velocity v produces magnetic field b around it such that, so first of all q v cross b अगर हम देखें तो magnetic field will be perpendicular to the velocity in all the cases. So this is the second correct answer. Moving to the next one. Two identical circular current carrying loop carrying equal current are placed in an axis inclined to at 45 degree with each other. Shown in the figure the resultant field at P. So first of all magnetic field and on the axis of a current carrying circular loop is given by mu naught I r square upon 2 times r square plus x square to the power 3 by 2. So first of all we will write the formula, the magnetic field on the axis of a current carrying loop mu naught I r square upon r square plus x square to the power 3 by 2 which is here 2 will also come. तो फिर उसके बाद हम अगर यहाँ पर देखें तो the current in this loop is like this, which is this loop will act as when seen from this side, this loop will act as a north pole. तो magnetic field will be in this direction B और इसको हम बोल देते हैं B1. फॉर दिस लूप दिस अगेन फ्रॉम व्हेन सीन फ्रॉम दिस साइड इट विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन B1 बोल देते हैं, B2 बोल देते हैं. तो व्हेन यू स्प्लिट द मैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग परपेंडिकुलर, इसका एंगल होगा 45 डिग्री. तो B1 cos 45 और B1 sin 45. ठीक है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी मिल गया B1 B2. और क्योंकि करंट इज सेम, डिस्टेंस अगर देखो तो √3r बोथ द डिस्टेंसेस आर आल्सो सेम. तो हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं B2 प्लस B1 cos 45 आई कैप विच इज इन द आई कैप डायरेक्शन. और तो बी नेट अगर हमको लिखना हो तो बी नेट इज B2 प्लस B1 cos 45 होता है √2 B1 बाई √2 आई कैप प्लस B1 बाई √2 जे कैप. ठीक है, तो B2 प्लस B1 बाई √2 आई कैप प्लस B1 बाई √2 जे कैप. और अगर हम इसको वैल्यू पुट करें V1 V2 और
कि तो B1, सॉरी, अगर यहाँ पर देखें तो B1 और B2 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सेम, डायरेक्शन सिर्फ डिफरेंट रहेगा। तो B1 B2 का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट इज़ म्यू नॉट, करंट सेम है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज √3r, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सॉरी रेडियस ऑफ द सर्कल तो r² ही रहेगा, और x की वैल्यू जो है वो है √3r, 2 टाइम्स r² प्लस √3r का होल स्क्वायर पावर 3/2। तो यहाँ पर अगर देखो तो म्यू नॉट आई r² डिवाइडेड बाई ट्वाइस r² प्लस √3 का स्क्वायर 3r² पावर 3/2। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो म्यू नॉट आई r² डिवाइडेड बाई 3 + 1 4, 4 का √2, 2 का क्यूब 8 विच इज़ 16r³, और ये r² r कट जाएगा जो कि बन जाएगा म्यू नॉट आई बाई 16, म्यू नॉट आई बाई 16। अगर हम यहाँ से म्यू नॉट आई बाई B1 B2 की वैल्यू पुट करते हैं म्यू नॉट आई बाई 16, तो म्यू नॉट आई बाई 16 सब में कॉमन रहेगा और बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 + 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। और अगर इसको देखो तो म्यू नॉट आई बाई 16, √2 को कॉमन निकालना है तो ये बन जाएगा √2, ये यहाँ पर आ जाएगा √2 + 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। तो दिस विल बी आवर फाइनल रिजल्ट एंड इट इज मैचिंग विद द फर्स्ट ऑप्शन, म्यू नॉट बाई 16 √2r, √2 आई कैप प्लस 16 जे कैप, √2 + 1 आई कैप प्लस 16 जे कैप। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इफ पैरामैग्नेटिक बार इज ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट देन इट इज, तो अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है देन इट विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। रिपेल्ड बाय, तो ये तो गलत है क्योंकि डायमैग्नेटिक रिपेल होगा। अट्रैक्टेड बाय साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो ये सारे ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो हमको ध्यान रखना है रॉन्ग स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो फॉर सब्सटेंसेज विथ -1 मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, मतलब डायमैग्नेटिक, तो ये तो करेक्ट है। डायमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी -1 to 0। सब्सटेंस विथ ससेप्टिबिलिटी मच मोर देन 1 इज पैरामैग्नेटिक। बेसिकली फेरोमैग्नेटिक का ज़्यादा होता है, पैरामैग्नेटिक का इट इज़ इन समवेयर अराउंड 10 to the power -3, 10 to the power -4, इट इज़ वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगेन सब्सटेंस विथ ये ससेप्टिबिलिटी इज लेस देन 1, नहीं, इसका ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होता है, तो ये भी गलत है। फेरोमैग्नेटिक का ज़्यादा होता है, 1 से बहुत ज़्यादा होता है। फिर ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन 1, ये भी सही है। तो अगर हम देखें 2 और 3 स्टेटमेंट्स गलत है, तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन इन विच 2 and 3 आर रॉन्ग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाई इलेक्ट्रॉन जस्ट टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो सबसे कम एनर्जी कितनी लगेगी सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, वही हो जाएगा वर्क फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूविंग टू द 56th क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ एनोड पोटेंशियल। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो एनोड पोटेंशियल के साथ रिलेशन है वो बताना है। तो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल वो है जब जिस पोटेंशियल पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपोजिट टर्मिनल तक पहुंचना छोड़ दें, मतलब उनका काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल रोक ले, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और जैसे जैसे वी इंक्रीज द पोटेंशियल फ्रॉम द स्टॉपिंग पोटेंशियल देन करंट विल इंक्रीज, and on increasing the current again, on increasing the potential difference, number of electron reaching the opposite terminal will increase। लेकिन क्योंकि number of electron which are ejected in case of photoelectric emission are limited या fixed, so we at a time this curve becomes constant, तो इससे आगे photoelectric current की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो this is the graph which we have studied everywhere and so we will not see this in these graphs। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन फैराडे हेनरी एक्सपेरिमेंट, ए कॉइल इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर फॉर डिफ्लेक्शन पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रॉन्ग। तो वी हैव टू अगेन अंडरलाइन दिस रॉन्ग। द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स,
तो बेसिकली फैराडे एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट को मूव कराना था। तो अब इसको अगर हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया तो गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्शन शो करेगा ये बात करेंगे हम। तो व्हेन द बायर मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द स्टेशनरी कॉइल, अगर बायर मैग्नेट को मूव करा दी डिफ्लेक्शन आएगा, ऑब्वियसली बात है, ईएमएफ आएगा, करंट आएगा। व्हेन द बायर मैग्नेट इट मूव अवे, अगर इसको दूर ले जाएं तब भी डिफ्लेक्शन आएगा और करंट आएगा। फिर उसके बाद व्हेन द बायर मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी कॉइल along its axis, ये भी सही था, ठीक है। When the coil is moved toward the stationary bar magnet is stationary, coil is moved, ये भी ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो डिफ्लेक्शन आएगा। When the coil and the magnet are moved without relative motion, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करा दो तो फ्लक्स का चेंज कुछ नहीं होगा, तो उस केस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। तो डी ऑप्शन इज और wrong statement, in which case the deflection will be shown. Next, moving to the next question. In the figure shown, the conductor PQ of length L is moved from x is equal to 0, x is equal to b. तो यहाँ पर ध्यान रखना कि x is equal to 0 से x is equal to b तक ही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर हम किसी रॉड को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ पर अगर हम रॉड को मूव करा के ले जा रहे हैं और उस केस में फ्लक्स चेंज हो रहा है तभी करेंट आएगा, और करंट कितना होगा, ईएमएफ आएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू वी एल बी, और ईएमएफ कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से लेकर के बी तक आएगा, इसके बाद ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा उसके बाद, क्योंकि फ्लक्स का जो कोई चेंज नहीं, फ्लक्स इनसाइड द कॉइल या इनसाइड द लूप इज कांस्टेंट, या रॉड इज नॉट कटिंग एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी एल एक्स हो नहीं सकता क्योंकि एक्स पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, 0 नहीं होगा यहाँ पर। अगर हम वी एल बी की बात करें, 0 to b करेक्ट ऑप्शन है ये, और वी एल बी फ्रॉम बी इज बी टू बी, इस रेंज में बोला वी एल बी होगा, नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ही नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट, इन अ सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टर, अगर प्योर रेजिस्टर है तो वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, ठीक है, उसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा। फिर a light bulb rated 100 watt is connected to a AC source simply, तो power is equal to VRMS IRMS, हमसे IRMS करंट पूछा है, तो power is given as 100 watt is equal to VRMS is 220 volt into करंट पूछ रखा है, तो 100 upon 220 which is again 5/11, ये हो जाएगा तुम्हारा करंट। और 5/11 क्योंकि 5/10 0.5 होता है, तो अगर बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो 0.5 से कम वैल्यू आएगी, 0.5 से कम वैल्यू आएगी, तो ये तो हो नहीं सकता। और ऐसा थोड़ी है कि अगर तुमने 5/11 किया तो 0.22 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 2.22 तो कोई चांस ही नहीं है, बचा कौन, कैलकुलेशन सिंपल लॉजिक लगाओगे तो 0.5 से छोटा वैल्यू कौन सा है, 0.45। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो इसी के साथ हम लोगों ने पूरा का पूरा आज का KCET का पेपर डिस्कस कर लिया है, और आप लोग कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको पेपर, आपका पेपर कैसा हुआ, और अगर ये शॉर्टकट्स आपको पहले पता होते तो क्या आपको इस पेपर में और कम समय में ज़्यादा सवाल सॉल्व करने से में मदद मिलती, ठीक है। और आगे के पेपर्स को भी पढ़ने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम इसी की तरह आगे भी क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड करते रहेंगे, जिसमें हम छोटे से छोटे तरीके में हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इन सब बातें में डिस्कस करेंगे, ठीक है।